systems provided organism network of point-to-point connections for acute coordinations. काफी organism 2 point point-to-point connections for तेजी से and slow down coordinations and coordinations slow because present slow integrals present. Neural system provides an organism's network of a point to point. जितने भी न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो सारी क्या कहते हैं कि एक नेटवर्क का जाल बनाते हैं एंड ये जाल जो प्रेजेंट होती है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का काम करती है जो कि काफ़ी तेज़ी से होती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है और स्लो टाइम्स के लिए होता है बट इन दिस इंडोक्राइनिक सिस्टम प्रोवाइडेड द chemically integrates through hormones. Endocrine systems are provided. So the provides chemically chemicals endocrine chemicals का secretion करता है यही secretion तुम्हारा क्या करता है integrals through hormones इसका formation करता है. In this chapter so we will learn about the neural systems of humans and neurals and coordination chapter में सिंपल सिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं. ह्यूमंस के न्यूरल सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं. मैकेनिज्म टू देयर न्यूरल कोऑर्डिनेशंस और न्यूरल कोऑर्डिनेशंस के मैकेनिज्म को दो चीज़ अध्ययन करते हैं. ह्यूमन सिस्टम ऑफ न्यूरल के बारे में अध्ययन करते हैं एंड सेकेंड जो प्रेजेंट होता है वो होता है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल्स कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है एंड थ्रू द लाइक ट्रांसमिशन कि ये इनका आपस में ट्रांसमिशन कैसे होता है of the nerve impulses and impulse coordinations, impulse conductions. impulse का conductions कहते हैं कैसे होता है by the वन सिनेप्सिस से दूसरे सिनेप्सिस मतलब एक इम्पल्स का दूसरे इम्पल्स के थ्रू कैसे इनमें कोऑर्डिनेशन होता है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. सिस्टम में पहले ये तो उसका समरी था. समरी के बाद जो आएगा वो होता है तुम्हारा न्यूरल सिस्टम्स. फर्स्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या होता है? न्यूरल सिस्टम व्हाट इज द न्यूरल सिस्टम. इसमें बताया गया कि न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स. जितने भी न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट हैं ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स सभी एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म में नहीं सभी एनिमल्स में इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड न्यूरल सेल्स. क्योंकि नर्व से है तो न्यूरल सेल से ही फॉर्मेशन हुआ होगा. तो सिंपल से द न्यूरल सिस्टम्स ऑफ ऑल एनिमल्स is composed of a highly specialized cell. क्या कहते हैं इसको? नर्व सेल्स. इसमें की पॉइंट है all animals not all organism. all animals have a composed of highly specialized cell is called neural cells कहते हैं. and we can detach receives and transmits different kind of stimulation. ये क्या कहते हैं? which can detect
जो नर्व सिस्टम होता है वो डिटेक्ट करते हैं एंड रिसीव करते हैं, उसको पहले पहचानते हैं, सिग्नल को पहचानते हैं, फिर उसको रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन करने के बाद वही ट्रांसमिशन क्या करते हैं, तुम्हारा स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, और हमारे बॉडी में बहुत तरह के स्टिमुलस को एक्टिवेट करता है। द न्यूरल ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी सिंपल इन लोअर्स वर्टिब्रा। हाँ, छोटे जीव है तो उसमें उतना न्यूरल सिस्टम ग्रो नहीं होता होगा, तो जितना ग्रो नहीं होगा उतना ही वो सिंपल टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिया है कि हाइड्रा, हाइड्रा में जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यू नेटवर्क प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ अ न्यू नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रा। इनवर्टिब्रेट में लोअर इनवर्टिब्रेट, ऑल इनवर्टिब्रेट में नहीं, केवल लोअर केवल लोअर इनवर्टिब्रेट में एग्जाम्पल में दिए तुम्हारा हाइड्रा। इसमें क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा, नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स कंपोज बाय नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का केवल नेटवर्क प्रेजेंट होता है। द न्यूरल सिस्टम्स इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड, और द न्यूरल सिस्टम इज बेटर, इससे और अच्छा विकसित हुआ किसमें, इन इंसेक्टा में, वेयर इज अ ब्रेन is present along with a number of ganglions. ब्रेन होता प्रेजेंट होता है and present along with a numbers of ganglions and neural tissues. Ganglions and neural tissue, the vertebra have a more developing neural system. सही कि जैसे जैसे जीव ऊपर से जो वाटर से लैंड पे गया, वैसे वैसे उनमें एवोल्यूशन बढ़ता गया, इवोल्यूशन बढ़ने के कारण उनमें डेवलपमेंट भी बढ़ता गया, डेवलपमेंट बढ़ा। और ऐसे लोअर हाइड्रा में इट वॉज प्रेजेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, बट हायर एनिमल्स बॉडी ब्लड हैव अ मोर डेवलपमेंटेड न्यूरल सिस्टम, मोर डेवलपमेंट न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्टा, वेयर इज अ ब्रेन इज प्रेजेंट along with a number of ganglions की वर्ड यहाँ पे कि जो इंसेक्टा होते हैं, इंसेक्टा वाला ब्रेन is present along with in insecta and is present along with the numbers of ganglia and तुम्हारा प्रेजेंट होता है न्यूरल टिश्यू, गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। द नंबर ऑफ इंसेक्टा इज प्रेजेंट ऑफ द ब्रेन्स एंड इट ब्रेन्स आल्सो, इसके रूप में ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इट वाज अ डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ गैंग्लियंस एंड न्यूरल सिस्टम सिंपल से जो नर्व्स होते हैं ब्रेन का ग्रोथ हमारा सिंपल सा हाइड्रा से उसमें पाया जाता है कि एक्साइटमेंट बॉडीज पाई जाती है जहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सबसे डेवलपिंग दोबारा रेटिना में बताया गया साइड ग्लैंड की रेटिना में प्रेजेंट होता है, बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है जैसे मस्तिष्क में उनका विकास और आदि
बढ़ती गई। आपको प्रेजेंट होता है तुम्हारा न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन्स न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन्स न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन्स में न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। द न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक सीएनएस होता है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। द ह्यूमन सिस्टम इज डेवलपिंग इनटू टू पार्ट्स। On central nervous systems, ANS and PNS present with nervous systems and peripheral nervous system. CNS are central nervous tissues and peripheral nervous tissue present। CNS में प्रेजेंट होता है तुम्हारे पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो CNS इंक्लूडेड, CNS पे क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ENS CNS एंड PNS दोनों प्रेजेंट होता है। NS एंड PNS दोनों वहीं पर। CNS में तुम्हारा दो पार्ट आते हैं, एक प्रेजेंट होता है तुम्हारा ब्रेन एंड एक प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन सी साइड होती है? जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, it was the site of formation, the processing and coordination, and PNS comprised of all the neural nerves, comprised of all the nerves of the body's association with CNS and the nervous fibers of the PNS. Two parts, two fibers, efferent fibers and efferent fibers. Efferent fibers and efferent fibers present on the side. Its sites of informations, sites of informations processing and controlling। कहाँ से होता है तुम्हारा? CNS से। CNS से क्या क्या प्रोसेस चलता है? CNS से प्रोसेस चलता है। ये एक ऐसे CNS को दो भागों में बांटा गया है, दो होता है, जो कि एक होता है तुम्हारा ब्रेन एंड दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये इट वाज द साइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सी साइड होती है? CNS में होता क्या है? CNS इट वाज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। प्रोसेसिंग करता है एंड कोऑर्डिनेशन करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है क्या? CNS the processing and coordination present. It was the process of processing and coordination present. It was the processing and coordination present होता है। वही पे जो PNS होता है, PNS was compressed, PNS compressed of all the compressed of all nerves of the body, nerves of the body, association nerves of the body, associations, जितने भी nerves होते हैं, PNS compressed of all CNS and PNS compressed of all the nerves of the body's association with CNS। जितने भी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, पेनिस के जितने भी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, इट वाज एसोसिएशन CNS, जैसे कि ब्रेन स्पाइनल करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसमें, टू टाइप्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट होते हैं इसमें। CNS में एक एफिरेंट फाइबर प्रेजेंट होता है एंड दूसरा होता है तुम्हारा इफिरेंट फाइबर प्रेजेंट होता है। efferent fibers and efferent fiber present in the efferent nerves fibers। तो efferent जो होता है, nerves fibers are transmitted impulse to the from tissue organism to CNS, tissue organism से to the CNS, टिश्यू से CNS तक। यानी कि मोटर होता है, मोटर एफिरेंट होता है
क्या होता है तुम्हारा टिश्यू ऑर्गन से लेके कहाँ तक जाता है ये टिश्यू ऑर्गन से लेके जाता है तुम्हारा ये सीएनएस के पास CNS के पास लेके जाता है एंड efferent transmits to the regulatory impulse from the CNS ये मतलब absent CNS2 CNS2 peripherals concerning peripherals to say an or to such organ present करता है PNS is divided into two divisions of somatic neural systems and autonomous neural system efferent are divided into two the PNS को डिवाइड किया है दो टाइप में होते हैं एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है PNS are divided into two parts में डिवाइड होता है एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमस सिस्टम प्रेजेंट होता है अंदर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम relay impulse from CNS to skeleton muscles ये क्या होता है तुम्हारा CNS ने तुम्हारा कहाँ पे लेके जाता है skeleton मसल्स तक लेके जाता है कौन सोमैटिक नर्वस सिस्टम हाँ सोमैटिक तो कोशिका ये सीएनएस तो तुम्हारा रेगुलेटेड करता है तुम्हारा ना यहाँ तक स्केलेटल मसल्स से सीएनएस से तुम्हारा स्केलेटल मसल्स सिस्टम तक कौन लेके जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड रिलैक्स तो while the autonomous nervous system impulse is transmitted from CNS to autonomous to involuntary muscles and the somatic muscle system are involuntary muscles ये involuntary मतलब स्मूथ मसल तक स्मूथ मसल्स तक तुम्हारे आवेग को कौन से इम्पल्स को कौन लेके जाता है तुम्हारा सीएनएस ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम लेके जाता है कौन क्या लेके जाता है ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम लेके जाता है तुम्हारा सीएनएस से तुम्हारा इनवॉलेंट्री मसल्स तक जो आवेगों इम्पल्स को ट्रांसमिट कराता है इट वाज कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि स्मूथ मसल्स में present the full organ system of muscles body the autonomous nervous system is the further classified autonomous system is further classified क्योंकि इनवॉलेंट्री होता है इनवॉलेंट्री तुम्हारा इनवॉलेंट्री आगे इसको दो भागों में बांटा गया किसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम sympathetic nervous systems and parasympathetic nervous system and it's make like present the visceral nervous system present to the it was a visceral nervous system to the visceral nervous system visceral nervous system present to the visceral nervous system is the parts of peripherals it was the part of peripheral nervous systems it was the part of peripherals nervous peripheral nervous systems that compressed the whole complex they compressed and peripheral nervous systems that compressed the whole completed of nerve fibers it was compressed it was compressed it was the compressed complex organ
complex uh, complex of nerves fibers, ganglia, and phylexes. Phylexes, phylexes by which travel and by which impulses traveling from central nervous system to visceral nervous system and from the viscerous this, uh, viscerous to the central nervous system and traveling nerves to central nervous system to visceral nervous system is called transverse. बराबर जो विजुअल नर्वस सिस्टम तुम्हारा प्रेजेंट होता है इट द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिंपल सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तुम्हारा पेरिफेरल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ये पार्ट्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के इट वाज द पार्ट्स ऑफ विजुअल नर्वस सिस्टम्स एंड इट वाज कंप्रेस्ड दैट अ होल कॉम्प्लेक्स nerves it was compressed करता है whole nervous system just like fibers ganglions and plexus fibers ganglions and plexus in by plexus by which impulses traveling from central nervous system which nervous are traveling of travels to the vessels and from the vessels to the central nervous system present with the neural systems and function unit of a neural system. The neurons as a neurons अब ह्यूमंस में बात कर लेते हैं तो ह्यूमंस में सबसे फंक्शनल यूनिट कौन सा करता है न्यूरॉन्स में इट वाज असोड टू द neurons is the functional as structures unit of a nerve systems it is a microscopic structure होता है अच्छा माइक्रो होता है microscopic structure present and there are three major parts present namely cell body dendrons and axon present of the cell bodies containing the cell body में बहुत cytoplasm present the cytoplasm में क्या present होता है cytoplasm में are formed are ribosomes plus RER plus ribosomes ये तुम्हारे dendrite plus cytosol में present होता है and the cell bodies containing cytoplasm with typical cell organelles उसमें बहुत से एक typical cell organelles present होते हैं किसमें तुम्हारे साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन्स की बात करें तो जैसे तुम्हारे RER हो जाएंगे RER प्लस राइबोसोम्स ये तुम्हारे typical राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड द सेंट्रल गैंग्लियन बॉडीज एंड जो सेंट्रल गैंग्लियन बॉडीज होती है और उन दोनों को मिल कहते हैं इट वाज कॉल्ड निसर ग्रैन्यूल्स एंड शॉर्ट फाइबर्स दैट उसमें कुछ छोटे छोटे फाइबर्स और ब्रांच repeatedly and projected ब्रांच रेपिडली होते हैं एंड प्रोजेक्ट निकलते हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी एंड इट वाज प्रोजेक्ट छोटे छोटे पार्ट्स साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे पार्ट्स का डिवीजन होता है एंड इट वाज प्रोजेक्टेड आउटसाइड प्रेजेंट होता है सिंपल सा nerves is the microscopic structure present होते हैं the three major parts of these structures are first cell body dendrites and axon present होते हैं the cell bodies containing cytoplasm cell bodies containing cytoplasm with a typical cell organ typical cell organ present होते हैं just like IR ribosomes certain granulary खड़िका में granular bodies नहीं present होता granular bodies present is called Nissal's granulate present and इसमें से बहुत short fibers present होता short fibers which branch repeatedly and projected to the cell bodies it's called Nissal granules called dendrites dendrites with big cells body present होते हैं and उसमें बहुत से पदार्थ present होते हैं जो न्यूक्लियस का काम करते हैं न्यूक्लियस swan cells axons
एक्सॉन पे जहाँ पे सेंसर अनुपस्थित होते हैं, माइलिन से माइलिन से न्यूरोलेम मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट, जहाँ पे नोड्स पे प्रेजेंट, एक्सॉन के सभी पार्ट्स पे प्रेजेंट होने वाले मेम्ब्रेन्स का अधिकार न्यूरोलेमा प्रेजेंट होती है। नोड्स ऑफ रैंडी प्रेजेंट होते हैं ऑन एक्सॉन्स टर्मिनल्स एंड सिनेप्टिकल्स नोब्स प्रेजेंट होते हैं। This fiber transmitted impulse towards the cell body, and जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो इम्पल्स को किधर भेजते हैं, towards the cell bodies. The axon is a long fibers. Axons is the long fiber, but dendrites is a small fiber present to the distals end of which is branched. The distal end of that is a branched. Each branch terminates as a bulb like structure called synaptic fluid. Distal end of the branched. Distal end of which is branches called synaptic node. It was called a synaptic node, which possesses synaptical vesicles containing chemical is called. So तुम्हारा also distance in पे present होता है branched could be represented is called a synaptical node, and synaptical nodes are transmitted to containing of chemicals contents of chemicals present होते हैं इसमें से। which branch which are the synaptical vesicles containing chemicals called neurotransmitters, the axon transmitters knobs. जो axons transmitter the knob impulse away from the cytosol body से दूर लेके जाती है, away from cytosol bodies and it to the synapses are to the neural muscular junction. या तो जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर इम्पल्स को लेके जाती है या तो सिनेप्स की तरफ लेके जाती है या न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ लेके जाती है। बेस्ड ऑन द numbers of axons and dendrons, the neurons are divided into three types। तुम्हारा मल्टी सेलुलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है जिसमें वन एक्सॉन प्रेजेंट होता है एंड मेनी डेंड्रॉन्स टू मोर डेंड्रॉन्स कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर प्रेजेंट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे bipolar neuron present, the bipolar neurons which one axons and केवल एक axons and one dendroids present, which one axons and one dendroids, one axons plus one dendrites present, one axons and one dendrites present, found in the eye of retina. It was present of retina and unipolars present of unipolar cell bodies which one's axons are only केवल axon present होता है, एक cell bodies and only cell bodies। उसमें तुम्हारा cell body plus one axon present होता है, one axons present होता है cell bodies and एक्सॉन प्रेजेंट होता है। यूनिपोलर तुम्हारा एम्ब्रॉनिक स्टेज बनता है, एम्ब्रॉनिक स्टेज में तुम्हारा यूनिपोलर एम्ब्रॉनिक स्टेज में तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रॉनिक स्टेज फाउंड इनटू यूनिपोलर सिस्टम पर। देयर्स आर टाइप्स ऑफ टू टाइप एक्सॉन्स दो तरीके से निम्नली माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जिस पे माइलिन प्रेजेंट होता है माइलिनेटेड, जिस पर एक्सॉन्स नहीं अपने उपस्थित होती है उसे नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। तब माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स आर इन्वॉल्व, जो माइलिनेटेड से नर्व्स फाइबर होते हैं मे बी इन्वॉल्व्स ऑफ स्वान सेल्स आर नॉट।
may be involved. The myelinated nerve fibers, क्या होता था myelin the myelinated nerves fibers, the myelinated nerves fibers may be in maybe involves of स्वान सेल, बिकॉज जहाँ पे भी स्वान सेल अनुपस्थित होते हैं वहाँ पे भी मेलिनेशन का फॉर्मेशन होता है, पर वहाँ पे कौन करता है, वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स ऑफ माइलिन सच अराउंड द एक्सोस द कैप्स between two arches of myelinated node of randomly myelinated nerves fibers are found in the myelinated nerves fibers are found in the spinal and cranial nerves. Myelinated nerves fiber myelinated myelinated nerves myelinated nerves fibers myelinated nerves fibers are found in are found nervous system are found in or from spinal nerves and cranial nerves present. The spinal nerves and cranial myelinated nerves fibers are present into the myelinated nerves fibers are present. Myelinated nerves fibers are found in the spinal nerves and cranial nerves present. The time myelinated found in the spinal nerves and cranial nerves present. Unmyelinated nerves fibers is enclosed by Swan cells unmyelinated. So it does not forms of myelin around the axons. It is commonly found autonomous and somatic nervous system present. It was unmyelinated unmyelinated nerves fibers. Unmyelinated nerves fibers are commonly found present in autonomous and somatic nervous system. Unmyelinated nerve fibers are present in autonomous and somatic nervous system. Present the myelinated present in spinal cord and cranial bone. Present the myelinated nerve systems as present in myelinated nerve system are present in around myelinated nerves it is commonly unmyelinated nerves fiber present in autonomous and somatic nervous systems. Autonomous nervous systems and somatic nervous system. Autonomous nervous system and somatic nervous and PNS represent the unmyelinated nerves are present in PNS and myelinated nerves fiber are present into PNS or CNS में प्रेजेंट होता है सीएनएस में ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बाय नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होता है पीएनएस में तुम्हारा अनमाइलिनेटेड नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होता है unmyelinated nerves fiber present with generations of connections of nerves impulses three step में present होता है. Nerves are excitable cells. जो neurons होते हैं are excitable cells because their
neurons are excitable cells because their membranes are in a polarized. Neurons are excitably cells present होते हैं, न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्साइटेबली सेल प्रेजेंट होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स, क्योंकि इनके मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. एक्साइटेबल स्टेट क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल न्यूरॉन्स बिकॉज it is found a polarizing state. Statement true and it was assessing and reason to and about explored some. Do you know why the membranes of neurons are polarized? As different types of ion channels are present in neural membranes. क्यों polarized होती है? क्योंकि इसके membranes represent different types of and then this ion channel are present that selectively permeable. This ion channels are selectively permeable to different ions when a neurons is not conduction enables. This ions channels are selectively permeable. Many types of channels present in two neurons membranes, and this ion channels are selectively permeable from ion channels to present different types of ion channels present. This ion channel are selectively this ion channel are selectively permeable. This ion channel is selectively permeable into different and के लिए selectively permeable means neurons is not conducting any impulse that is called a resting of and membranes is comparatively more permeable to potassiums and nearly permeable to sodiums, and similarity the membranes is impermeable of resting statement. So neuron resting membrane resting axonal membrane present होती है. Resting axonal membrane present होती है तो more permeable. It was a more permeable to potassium ions and nearly permeable permeables and nearly impermeables of sodium and impermeables of sodium impermeables of sodium ions, and similarly the membranes is impermeable of and negative ions sodium and impermeables of negative ions present. It was permeables of potassium ions and impermeables of sodiums and potassiums and impermeables of sodiums and present in the negative charge. So the exoplasm consists
20. The exoplasm inside the axons containing the exoplasm inside the axons containing highly concentration of एक्सोप्लाज्म के अंदर सबसे हाईली कॉन्सेंट्रेट तुम्हारा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स and highly concentrated potassium and negatively charged protein present होता है negatively charged protein present and low concentrate of sodium ion in concentrates the fluid outside the axons containing a low concentrator of potassium and high concentration of sodium and thus from contra- concentrated gradients. This ionic gradients across the resting membranes are maintaining by activities transports of ion by sodium potassium pump के through and which transport three sodium ions outside three sodiums and through the outside and two potassium ions in the three sodium potassium into the cells. As the result, the outer surface of the exoplasm positively charged हो जाती है and the charge with the inner surface become negatively charged होते हैं. This is polarized charged and this therefore is polarized. The electrical potentials difference across the resting plasma membrane is called the resting potential. The resting potential generate present होता है. आउटर सर्विस पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो इधर पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इनर साइड ये तुम्हारा नेगेटिवली. दिस इज कॉल्ड resting potentials. It was called a resting potentials. You might be curious to know about the mechanisms of generating software nerves impulse. You might be curious to know about the mechanism of generations of nerves impulse and its conductions along an axon's vein. A stimulus is applied at the sites. Either sides on the polarized membranes. The membranes at the site. The membranes. This leads and this lead to a rapid influx of students and followed by reversible polarizations. This polarization membranes, the membranes at the site, becomes freely permeable sodium ions. This lead to a rapid influx of sodiums followed by reversibles of the polarity at this site. On the outer surface of the membranes becomes negatively charged and the inner sides become positively charged. The polarity of the membranes at the sites A is thus reversible and the hence depolarized. The electropotentials difference across the plasma membranes at the sites A is called action potentials. Electropotential present at
which is the fact to terms enormous impulse at sites immediately at the axons. Membranes has a potential charge on the outer surface, potential charge on the outer surface, and then negatively charge on the its inner surface. As a result, certainly follow on the inner surface and certainly follow on the inner surface for the sides A to side B, and the result that follows on the inner surface from side A to side B on the outer surface. Correct. To complete the circuits that flow. Transmitted from so one neurons to another through one neurons to the another through junctions is called synapses, and synapses is formed by the membranous, and a synapsis is formed by the membranous of the presynapticals by the presynaptical nodes and postsynaptical nodes present with them, which may or may not be separated by the gap of synaptical cleft. Presynaptical nerves pre may or may not separated by a gap is called synaptic cleft. This is two types this is there are two types of synapses, namely electric synapses and chemical chemical synaptic neurons is a very may or may not be separated by a gap के separated है तब तो दो टाइप्स होते हैं electrical synapses and the electrical synapses surrounding neurons is a very close proximity, and electrons correctly current can flow directly from neuron.
synapse chemically synapse present होता है. It was an electrical synapse से याद है electric the post synaptic membranes plus presynapticals are in a very close, and electric current can follow from neurons into another neurons transmitters up an impulse across an electric synapse is a very strong impulse current on the single axon along a single axon's impulse transmissions across the electron is the also always faster than the prosthetic chemical synapses. The electric synapses is the rare in body system. Are and the chemicals membrane is present separated by the fluids. It was separated by fluid. It was called synapticals club know how the presynaptic nerves transmitted so on impulse external potential and chemicals and neurotransmitters are involved in the transmission of impulse or the synapses. The axons terminals containing physical fluids, neurotransmitters, when an impulse extends, when an impulse potential arrives to the axon terminals, it stimulates the movement. It stimulates the movement of the vesicles towards the axon terminals, synaptical vesicles, synaptical cleft membranes होते हैं, synapses synapses present the membranes that release their neurotransmitters synaptics. They are neural transmitters synapticals cleft the neurotransmitter synapticals capture the release neurotransmitters bindings in the receptors present on the postsynapticals membranes. This binding opens ions channels जुड़ने के बाद उसमें ion channels खुलते हैं and generated potential in the postsynapticals the new potential develop maybe either side new potentials. Maybe either sidedly or inhibitory other sided the inhibitory the neural systems. Central neural systems the brain is the central neurals. The brain is the central neural processing organs of our bodies and act
as the command and controls कौन करता है, सीएनएस करता है. command and controls का फॉर्मेशन कौन करता है, दोबारा सीएनएस के थ्रू होता है. needs controls the voluntary movements, balancing body weights and functionally upper vitals, involuntary organelles, lungs and सबको रेगुलेट करता है. थर्मो रेगुलेटर्स hunger and thirst, cardiac rhythm cycles of body and activity of several endocrine gland, human behaviors. It also could be the sites of processing of visions, hearing, speech, memory, and dialogue, emotions, and thoughts. The human's brain is well protected by the skulls. Inside the skulls is covered by cardiomyopathy, cranial lenses consistent of an outer layer called the duravators, and it was a very thin layer called actinoid. Corpusculations. The outer layers of duramators or it's very thin middle layers called animals, and the inner layers which contain the brain tissues called perimeters. The brains can be divided into cerebrum, hemisphere present cerebrum, hemisphere present cerebrum, hemisphere present the corpus callosum present, corpus callosum present the corpus callosum cerebrals, hemisphere cerebrum, cerebrums forebrain, cerebrum, cortex, hypothalamus, hypothalamus, and cerebrum present. Thalamus, hypothalamus, and thalamus hypothalamus present होता है. hypothalamus ये तुम्हारा thalamus उसको जस्ट नीचे तुम्हारा epithalamus, hypothalamus present उसको जस्ट ऊपर midbrain present है, उसको जस्ट ऊपर midbrain present है, उसको जस्ट ऊपर midbrain से bones cerebral cortex just like flower like structure present, tree like structure present, cerebral present and double contains cerebral quite a depth present, cerebral quite a depth present resides cerebral cortex. Once spinal cords present with the cerebellum present with the cerebral cortex, cerebral cortex, Gemini, cerebral sequoia, Gemini present the cerebral sequoia, and cortex, Gemini present with hypothalamus, thalamus, hypothalamus present, progesterone scarum present with that midbrain just around present of the one midbrain. Around midbrain present, just around midbrain cranial hemisphere present, thalamus and hypothalamus cranial present, hypothalamus present. Hypothalamus present with them. The axis of forebrain. Forebrain consists of forebrain में क्या होता है, cerebrum, thalamus and hypothalamus, cerebrum, cerebrum, thalamus and hypothalamus. Cerebrum, thalamus and hypothalamus present. So cerebrum, thalamus and hypothalamus present होता है. The cerebrum is the major parts of the human's brain. Which are the major parts of human cerebrum? Cerebrum is the major part of human brain. Cerebrum is the major parts of human's brain present. Cerebrum is the major parts of human brain present. Cerebrum is the major parts of the human's brain. A deep cleft cerebrum so longitudinal into two half scattered terms of the left right sides hemispheres. Hemispheres are with tract connected with the tract of nerves fibers called collision. Collision is the hemispheres are connected by the main part of the deep cleft divides the central longitudinal into two halves. Central longitudinal into two halves divided within which are terminates as the
left and right cerebral cortex. It was terminated with left and right cerebral hemispheres, into which are terminates as the left and right cerebral hemispheres, or terminates with left and right hemispheres. Left and right hemisphere left and right hemispheres are the joined by the fibrous tract. Fibrous tract Tracts of nerves fibers are called corpus callosum, present with the layers of the cells which covers the cerebral hemispheres, the cerebral cortex, and is thrown into uh, thrones abutments folded. The cerebral cortex are referred as the gray matters. Glyce appearance, gracious appearance present the gracious appearance of the neural cells bodies are concentrated. So the hairs have been given the colors of the cerebral cortex contains motor areas, sensory area, and larger regions of neither clear sensory or motor. This is called associations. Area are responsible for complex functions like in, in intersensory associations, memory, and communications. Associations area. Associations area is the complex functions division. Complex functions. It was a complex functions like intersen intersensory associations, memorial, responsible, memorial responsibles, memorial responsibles, and communications. Memorial responsibles and communication present the fibers of the tract region. The tract is covered by myelin sheath, which consider the inner part of cerebral hemisphere, and they give an obscure average of the layer. The hence is called white matrix and cerebral suburbs around a structure is called the thalamus. Thalamus, which is the major coordinate centers of sensory and motor signals. Thalamus. Nature. Maze.